Hello, Bacho. Let's see the question. Here, the question is saying that during the spindle formation, the part that is left after the chromosomes have moved to the poles is okay. So, spindle formation के दौरान we know that ये जो chromosomes है they will start moving to the opposite poles. Now we have to say that this leftover spindle part is known as what? हमारे पास चार options given है. First is phragmoplast, centrosome, centriole, and none of these. Fine. So, if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो key concept use होगा that is basically the spindle formation. Fine. So, spindle basically होता क्या है, how it formed, we have to understand. अगर हम बात करें spindle fibers की, we know that spindle fibers are basically a type of microtubule. ये एक microtubule का पार्ट है एंड जब हम बात करते हैं microtubule की, we know that it is made up of a protein known as tubulin. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दे बेसिकली अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स. तो ये कहाँ से अराइज होता है? दे बेसिकली अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स. नाउ अगर बात करें स्पिंडल फाइबर्स का मेन फंक्शन होता क्या है, ठीक है, जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, वी कैन से दे विल हेल्प इन द डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल के डिवीजन में हेल्प करती है. फाइन, सो इट विल हेल्प इन द division of genetic material. So that is the reason why we require the formation of spindle fibers. ठीक है, अगर इसको हमें समझना है with the help of a diagram, let us suppose ये हमारा सेल है. Fine. Now on the opposite side of the cell, we have the presence of the cylindrical structure known as centrioles. हमने यहाँ पे देखा that the spindle fibers basically arise from the centrioles. तो यहाँ से हम बना सकते हैं that from the centriole basically the spindle fibers will be formed or they will originate. ठीक है, and after this the spindle fibers will help in the separation of sister chromatids, or we can say in the division of the genetic material. Now the question is saying that whatever the left spindle fiber we have, that is known by what name. ठीक है, तो अगर हम बात करें the leftover spindle fibers की, तो we can say जो भी स्पिंडल फाइबर्स हमारे लेफ्ट हैं दे विल बेसिकली कंबाइन विद माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, तो वो कंबाइन करेंगे विद द माइक्रोफिलामेंट एंड अलोंग विद ER, that is the endoplasmic reticulum, and the combination of all these three will lead to the formation of phragmoplast. Okay, so it will lead to the formation of phragmoplast. ठीक है, एंड ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है इट इज बेसिकली एक्टिंग एज द प्रीकर्सर ऑफ सेल प्लेट. ओके, ये कैसे एक्ट कर रही है? इट इज बेसिकली एक्टिंग एज द प्रीकर्सर ऑफ सेल प्लेट. जब हम बात करते हैं सेल प्लेट की, सो वी कैन से दिस सेल प्लेट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस नोन एज साइटोकाइनेसिस, मींस इन द डिवीजन ऑफ the cytoplasm. ठीक है, so this phragmoplast is basically acting as a precursor molecule for the formation of cell plate, because cell plate बनेगा then only the whole process of cell division will get ended, or we can say it will help in the process known as cytokinesis. ठीक है, तो ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है इसको अगर हमें डायरेक्टली सेल प्लेट में कन्वर्ट करना है, so we can say this phragmoplast will then combine with the vesicles. कह सकते हैं it will combine with the vesicles in order to produce the cell plate, and then this cell plate will help in the cytokinesis process. So हमने यहाँ पे देखा कि जो leftover spindle part है that is basically getting converted into phragmoplast, that is helping in the process of cytokinesis. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा that will be ऑप्शन ए, दैट इज फ्रैग्मोप्लास्ट. अगर बात करें ऑप्शन बी दैट इज सेंट्रोसोम, तो हमें मालूम है सेंट्रोसोम क्या होता है. वी कैन से सेंट्रोसोम इज बेसिकली अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेल, और इस सेंट्रोसोम के अंदर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स. ठीक है, सो ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज centrioles, and every centrosome have the presence of a pair of centrioles.
और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने देखा कि सेंट्रियोल्स का जो मेन फंक्शन है, या कह सकते हैं सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन है, दैट इज टू बेसिकली ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल। तो वो हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल। दैट्स वाई हमारे ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। So from this we have concluded that the correct answer for this question will be option A, that is phragmoplast, because whatever spindle that we have left after the spindle formation will get converted into phragmoplast. That is why it is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.